Yeah, good evening all. Welcome you all again to this session, Commodities Insights, Trends and Forecasts. This is the session 2 of the series. So 2 weeks back on 14th November, we started the series and came with the first session. And उसमें multiple points हमने discuss किए थे on the commodities for the last, for a month, then the view for the next 2 weeks. ये सब हमने discuss किए थे. Primarily, we touched upon gold, silver, crude, natural gas, and copper, basically 5 metals. So we are live on YouTube now. So I hope all the audience who are listening to the session now will have the live chat open, and we are simultaneously looking at the chat box also. If you have any queries, please put the queries there, and we will try to answer it as much easily as possible. And I have with me Mr. Anup Sahu. He is the research analyst for commodity derivatives at ICICI Securities. And I am Arvind Junka, product manager for commodities. I'm just quickly sharing my screen to tell you the agenda, how we will go ahead with the session today. Can anyone please confirm if my screen is visible? Yes, Arvind, it's visible. Okay. You can go ahead. Yeah. Cool. So just to give a quick background again, we at ICICI we come up with the weekly webinar. Every Thursday 4 p.m. you will have a webinar. So alternately you can you can have an idea. On the first and third week we will have basics of commodities, like how to trade commodities at ICICI Direct. What are the tools available? What are the services available? So some basics. What are the contract specifications? ये सब basics आपको first and third week में मिलेगा. And then the second and fourth week, like today we are in the fourth week, we are discussing something on fundamentals and technicals for commodities, something about the markets, what are all the news to follow, and how to actually step into the commodity derivatives trading world. Okay, so we will just quickly start the today's session, the Commodities Insight Trend Forecast number 2. So what we do in the series is we usually discuss the insights from past 2 weeks. Then we will discuss the current trend in prices, what are at what levels the commodities are trading right now. And then we will provide you the forecast for the next 2 weeks. We will use both fundamental analysis and technical analysis for you to help you understand with these. Right. And yeah, and of course मैं ये session को both English and Hindi दोनों में रख लूंगा so that almost everyone will be able to understand. So agenda ऐसे रहेगा हमारा today for the session. First, fundamental analysis, the major news, क्या क्या major हुआ था, what all to expect in the upcoming weeks, मैं discuss करूंगा. And then the technical analysis part, Anup Sahu will take it up from there. He will show you the charts, the levels, the resistance and support levels, what is the views for the next 2 weeks and all. And towards the end, we will take up the questions and answers from the chat. Yeah. ठीक है, अभी फंडामेंटल एनालिसिस में फर्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट विद सीज फायर. ये न्यूज़ तो आप सभी ने सुन रहे होंगे इन दिस वीक ओनली बिकॉज आई विल शो यू और स्टार्ट विद शोइंग द गोल्ड चार्ट फॉर यू. तो ये गोल्ड का डेली चार्ट है. दिस इज द डेली चार्ट फॉर द गोल्ड. दिस इज द गोल्ड 5 December expiry contract at MCX. So this candle, if you see, 25th November को जो बड़ा red candle दिख रहा है, this was because of the ceasefire news that we got. So basically, what is this ceasefire that we're talking about? As it explains, this ceasefire talks is happening between Israel and the Hezbollah. So it's been more than 14 months since there has been cross-border fights between Israel and the Hezbollah in the Lebanon border, in the southern Lebanon border. So आपने देखा होगा in the news also, thousands of people dying because of these strikes. So this finally, after 14 months, there has been this ceasefire talk being mediated by the US and France presidents. US President Joe Biden till now, and France President Mr. Emmanuel Macron. Okay, so उसके बाद what is the thing? 14 months cross-border attack, and ये जो ceasefire will had come into effect on Wednesday 4 p.m. That was yesterday. कल सुबह 4 बजे ये ceasefire in effect आया था. So because of this, a major red candle you can see in this gold chart. हमने last connect किए थे on 14th November. So this candle, so we were at the lower level in gold. उसके बाद you can see 1 week of positive movements. ये 1 week of positive movements gold के बारे में we will specifically discuss the volatility in gold and silver.
So last session में हमने देखा gold had hit all-time high of 2790 in terms of dollars, $2,790 in October, and silver had also touched an high of $34.86. ये हम लास्ट टू वीक्स पहले डिस्कस किए थे, owing to the US presidential elections and the rate cut scenario, major Middle East geopolitical tensions. So ये major reasons थे, right? But what we have now is that, so after all this fall, there has been 1 week of positive movement in bullion. This had been because of some soft economic data. Okay, US dollar prices and the treasury yields have been softening. And one more major thing was the geopolitical tension, which is the other one, the Ukraine attacking Russia in the last week. So these two reasons helped gold to strengthen again for a week. But again, this Monday, the ceasefire talks had helped the gold to come down again. So, but you can see what had been happening in the last 2 days, that there has been softness in the dollar and the US Treasury yields. You can see the US GDP which is steadily growing at 2.8% rate. And the US inflation had been up by 0.3% month of March is 2.8%. So what this will do is this will slow down the rate cuts. There is this caution in Fed rate cuts because since after Trump has been elected, हमने सोच रहे थे कि he will be imposing a tariff, right, on major trading countries like China, etc. So उस reasons के वजह से there is a caution in the Fed rate cuts, and also the economic data जो data points जो आते हैं, they have also been softening down. So because of which Fed has chosen to go down with the rate cuts. So these things have been helping to gold and silver to gain the momentum again in the last 2 days. So that is with respect to gold. But if I will have to summarize, basically a strong dollar and lesser rate cuts will be negative for gold. So strong dollar अगर strengthen हो रहा है, US Treasury yields और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, and if the rate cuts are not going to happen as much as we had expected, rate cuts थोड़ा धीरे धीरे हो जाएंगे. The aggression in the rate cuts that was expected will be coming down. So these points will have a negative impact for gold and silver. But meanwhile, the trade wars, जो भी ट्रेड टैरिफ्स की वजह से जनरेट and the Russia-Ukraine situation, these parts might help in the gold prices from falling down, right? Quickly, अगर आपको एक price levels को दिखा दूं, for gold, there is a range-bound movement in the prices which is at 2620 and 2660. So currently, अगर आप prices देखोगे, the gold international price at $2646. So with a little tilt towards south. So only a movement below 2620, the prices will weaken towards 2600, right? So अगर आप MCX में देखोगे in rupee terms, the MCX gold February contract is expected to decline below 75,500 as it remains under 76,600. So अभी आपने प्राइस देखा 75,500. So already 75,900 तो अभी reach हुआ है. Going ahead, Anup will discuss on the price levels also. So that was with respect to gold and silver volatility. But simultaneously मैं quickly एक दो slides दिखा देता हूँ आपको gold and silver के लिए particularly क्या points देखना चाहिए. Yeah, so bullion में so this is just a quick small slide. I'll just run through it quickly. So gold का major uses रहते हैं, you can see in this pie chart below. So jewelry as high as 46%, almost half of the demand for gold is from the jewelry segment. And then there is official holdings of 17%. Private investments के लिए लोग prefer करते हैं up to 22% for gold, and other requirements will be 15%. So this is the demand segments for gold primarily. So उसके हिसाब से अगर आप देखोगे what are all the price driving factors, ये right side table में देखिए, तो majorly the US Fed fund rate. So this plays a major role. Every week, every time when we come on the session, we will definitely be speaking about this Fed rates. This is that is one of the major things having impact on the gold prices. So आप देखोगे तो the habit has been like there has been an inverse relation. जब Fed rates अगर नीचे जा रहे, the Fed is cutting rates, that will support gold prices. But if the Fed has decided not to do it for at any point of time, the gold prices might come down. So there has been this inverse relation in the past. So higher Fed rates
will be positive for gold, lower will be negative. And inflation, higher inflation will again be positive for gold and lower inflation will be negative. Central bank buying will again be positive for gold and central bank selling will be negative. Geopolitical situations to pata hai, if there is any geopolitical situations which we do not need, then there is a positive impact on gold and negative if the things are stable. This is with respect to gold. And if we just quickly look at the volatility in this current financial year, FY25, till the month of October, there has been an average daily volatility of 0.92, almost 1% movement in gold. For example, अगर अभी 77,000 price चल रहा है, for example, so every day, almost every day, you'll be able to see 770 rupees price movement in gold. Right, that's what average daily volatility. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एवरी डे 770 रुपीज मूव हो रहा है. इट इज द एवरेज प्राइस मूवमेंट, एवरेज डेली वॉलेटिलिटी दैट आई बीन मेंशनिंग हियर. एंड साइमल्टेनियसली अगर सिल्वर के पास देखोगे, द प्राइमरी यूसेस मे बी ज्वेलरी, बट in this pie chart you can see more than 50%, that is as high as 58% of the demand is from the industrial segment. राइट, ये मैं हर वेबिनार में मैं स्ट्रेस करता हूँ. एनीवन हु हैड प्रीवियसली अटेंडेड माय वेबिनार वुड बी नोइंग दिस. आई ऑलवेज कीप स्ट्रेसिंग सिल्वर more than a precious metal should be looked as an industrial metal. Base metal prices के साथ compare करके देखना चाहिए how no the economic situations will impact the silver prices. And then net physical, अगर आप ज्वेलरी रिक्वायरमेंट देखोगे, इट इज ओनली 17%. उसके अलावा सिल्वर वेयर को 5%, फोटोग्राफी 2% एंड फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स में 18% डिमांड सेगमेंट्स है फॉर सिल्वर. सो अगेन यहाँ पे मेजर प्राइस ड्राइविंग फैक्टर अगर आप देखोगे, इट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. सो एन एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी पॉजिटिव फॉर सिल्वर, बट अ कॉन्ट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी नेगेटिव. Again, a comparison with the base metals that I've been mentioning. So higher price with base metals will be helping silver also, and a lower price of base metals will have a negative impact on silver. And of course, demand for jewelry also has an impact on silver. So gold में approx 1% हमने price movement average daily volatility देखे थे, but in silver you can see as high as 1.77% volatility in silver, averagely on a daily basis. So this was with respect to gold and silver, major points that you have to look at. So quickly अब हम energy के पास जाते हैं. So this was about gold and silver volatility. If you look at crude oil and natural gas, so what had happened again, the ceasefire had a major impact. मैं quickly यहाँ पे chart भी निकाल देता हूँ crude का, how the ceasefire had an impact. So this red candle here again, this is the daily chart, and this red candle on 25th November again was an impact of that ceasefire news. तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट जो टेंशंस ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाले थे, सो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी दे हैव सेटल्ड डाउन, दे हैव कूल्ड डाउन. दैट्स व्हाई दिस फॉल इन द प्राइसेस. बट देयर वर टू अदर थिंग्स व्हिच सपोर्टेड द क्रूड प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग मोर डाउन. वन वाज द फ्रॉम द इकोनॉमिक कैलेंडर. इफ यू लुक एट ये investing.com का इकोनॉमिक कैलेंडर है. इफ आई लुक एट द yesterday's डेटा, every Wednesday crude oil का crude oil inventory data आपको आता है. So this 3-star mentions it is a high volatility expected data, or it's a major data point. So crude oil inventory data कल आया था, which was expected to go down by 1.3 million barrels, actually went down by 1.8 million barrels. So there was a decrease in the supply, right? So it helped in supporting the prices. And also along with that, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किए थे कि ओपेक प्लस जो प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाला था, इट हैड पोस्टपोन्ड इट फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी. जो दिसंबर में प्रोडक्शन इंक्रीज करना था ओपेक प्लस ने, इट हैड पोस्टपोन्ड इट टू जनवरी. सो बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस दिस मंडे, उन्होंने जनवरी से भी और आगे के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, और मे बी दे विल डू. सो दैट हैड ऑल्सो सपोर्टेड द क्रूड ऑयल प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग इवन मोर. So that was with respect to crude oil. And for natural gas prices, you would have seen, if anyone is following natural gas prices, it has been amazing for natural gas. 22-month high, almost 2 years का high price आया था NYMEX natural gas prices में. Why? Because of the colder weather forecast. One major reason, one big reason for natural gas. One of the major demand segment for natural gas is the extreme weather conditions. So winters में हीट करने के लिए दे प्रेफर नेचुरल गैस इन द वेस्टर्न कंट्रीज. सिमिलरली समर मंथ्स में कूल करने के लिए, इंटरनल टेम्परेचर्स कूल करने के लिए, दे अगेन प्रेफर नेचुरल गैस. सो दैट्स हाउ नेचुरल गैस मेजर डिमांड सेगमेंट इज. सो कोल्डर वेदर फोरकास्ट आया था
which had pushed the natural gas prices to a 22-month high. But मैं simultaneously natural gas का भी आपको chart दिखा देता हूँ, so you'll be able to understand. So it touched the 305 levels at MCX. ये highs देख सकते हैं, but there has been a slight fall yesterday or day before yesterday. It was because क्या है ना, because of this higher demand from the colder weather forecast, there had been piling up of the stocks, right? So there had not been enough withdrawing of those stocks also simultaneously. So because of that, थोड़ा supply ज़्यादा होने की वजह से there had been a slight fall in the natural gas prices yesterday. But overall, you can see or you can expect the natural gas prices to go up in this season. After the winter season ends, then again the production factors, the inventory factors, ये सब depend करते हैं how natural gas prices will move. But for this season, for the month of December or till January, you can expect a positive movement in natural gas. With the support of prices, Anup Sahu will be able to explain more. So basically, there have been an inventory levels above 5 years high for natural gas. That was one point. So simultaneously, मैं natural crude oil and natural gas का price levels भी बता देता हूँ. At MCX, crude oil December is likely to face hurdle of today EMA at 5900 and weaken towards 5700 levels also. But if you look at MCX natural gas, again it is also going to face an hurdle near 282 and move lower towards 264 levels also. So this is the price levels for energy. Quickly, I'll just run you through this slide for energy also. जो major demand segments है. How to trade crude oil, ये वाला part ignore it. The fundamentals, just wanted to explain it to you. ये जो right side में आपको images दिख रहे होंगे, these are older images, but I just wanted to explain you कि क्या major fundamentals रहेंगे जो आप crude oil और natural gas के लिए follow करना पड़ेगा. One is the supply demand factor. जो मैंने अभी investing.com में आपको inventory data दिखाया था, the supply demand or the inventory, which basically gives the supply data. So that will have an impact on the prices. OPEC and US production, the OPEC countries, individual countries, आप OPEC websites में भी जाके देख सकते हो how much individual country is contributing to the world crude oil production. And then the oil rig count and inventory data. The dollar will again have an impact on the crude oil. Softer dollars will help crude oil to move up, the crude oil prices, and the strong dollars will again pull down the crude oil prices. And the economic data and political situations हम देख रहे हैं, which is having impact on the crude oil prices. So this has been the crude oil volatility till October in this financial year was 1.79%. Silver was 1.77%, and crude oil is even a little higher than that, 1.79% volatility on an average daily in this financial year seen. But if you look at natural gas, जैसे मैं पहले बता रहा था, the majorly driven by two factors, namely heating demand and cooling demand. So primarily इसी के लिए use करते हैं in the Western countries the natural gas. You can see here also the industrial segment, the electric power segment is also one of the major demand segment for natural gas. Other than that, then there is residential demands, commercial demands, and transportation demands. So if you look at right side, the major impacting factor would be the weather conditions. Any extreme weather condition will be positive for natural gas, increasing its demand. And inventories, of course, higher inventory will be negative, and falling inventory would be positive. The current scenario was that there is this extreme weather condition, but also there was a higher rise in the inventory, which pulled down the natural gas prices a little bit yesterday. And the production will also again have an impact on the natural gas prices, obviously. So this has been the volatility for natural gas in this financial year till October. 4%, as high as 4% is the natural gas volatility that you have seen. So good trading opportunity actually. And these are just a few contracts. You can skip this part. So that was with respect to crude and natural gas. I'll close this and quickly go to copper now. Copper, in the last session, we discussed that the prices were weighed down because of Trump's victory, and there was this disappointing stimulus from China. Again, another reason for copper prices to go down. But in this session, there seems to be a bullish view for copper also. There has been a depleting inventory at SHFE and LME. What are these two? SHFE is the Shanghai Futures Exchange, and LME is the London Metal Exchange. So these two exchanges, global exchanges, are where
base metals are primarily being traded, and which will actually have an impact on the global copper prices. And at India, we are price takers of these commodities, and we will follow these prices. And there has also been a rising cost of production from the major mines where copper is exported. And then there has also been a good demand from the China's auto sector. Even in the last week, there has been a good infusion of stimulus from the China central bank also. So all these factors had actually played a major role in giving a bullish view for copper. So simultaneously में copper का price ranges आपको दिखा देता हूँ. So MCX copper December is expected to find a floor near 800 and move higher towards 814. And a move above 814 will push the prices towards 818 also. This is with respect to copper. So going ahead, Anup will be able to provide you the technical analysis through the charts. Over to you, Anup. But meanwhile, if there are any queries, please put in the chat. I'll try to revert them. Yeah, Anup, over to you. Thank you, Arvind. Just a second. Yeah, 1 second. I'll go through tokens. Can I just take it? Take the Yeah, control? you can share your screen. Yes. Yeah, just a second. Yeah. Is it my screen is clear now? I hope so. Yeah, It it's is clear visible. and visible. Yeah, it's clear. Okay. You can put on slide. Yeah. Let's discuss on gold first. Last week or the previous week, we saw very high volatility movement in gold prices, even silver prices. Exactly, it has moved like rebounded from 2540 levels, which is 100-day moving average. And currently, again this week we saw some correction. You can see this is the weekly chart of spot gold. You can see that. Still the trend is up, as you can see. It is moving in a rising channel. The right now the immediate support for gold prices will be near around its 20-week moving average, which comes around 2580 levels, and near around 2540. These are very good strong support levels. 2540, as I mentioned earlier, this is a 100-day moving average in spot prices. Going ahead in the coming 1 or 2 week, I don't see a major movement like many major like breakout or major breakdown in gold prices. I am expecting a consolidation because this is the time of the last month of the year, so mostly the funds will liquidate their long, so we can see some correction. Similarly, market will wait for the Fed policy towards the third week of December, like it is on 18th of December. So till that time, we see some range bound activity. Most importantly, other central banks' action will be also monitored. Like we can expect ECB to lower the rates again in December, which could provide some support. There are few factors that is like contracting factors. One thing, the ECB rate cut will support gold prices, whether is this Fed stance on like lower rates in the coming year or strong dollar, that will check its upside. So these are two factors that will contradict. Again, the geopolitical says that is a crucial part for the time being. Geopolitical risk, अगर कुछ फिर से war होता है, फिर से कुछ ये होता है, definitely we can expect major volatility. So I expect 2750 or 2760 in COMEX, that will be a major resistance. अगर technical levels भी हम देखेंगे, so ये जो previous week के highs हैं, ये सब break होगा, then we can expect again 2800 levels. अदरवाइज ये पूरा 2 वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल कंसोलिडेट, ये रेंज में ही पड़ा रहेगा. हम लोग ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते. अभी हम चलिए गोल्ड एमसीएक्स का देखते हैं. दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट चार्ट ऑफ फेब्रुअरी एमसीएक्स गोल्ड. यू कैन सी ये जो है ये 100-डे मूविंग एवरेज है, दैट इज नियर अराउंड 75,000. अभी ये धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, तो 75,000 देखा जाए तो एमसीएक्स के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है. ये जो पूरा रैली हुआ था इसका 50% एक बार रिट्रेस होके मार्केट ने एक रिलीफ रैली दे दिया है. ओके, नाउ अगेन
ये जो 74,000 का 50% रिट्रेसमेंट रैली है, उससे पहले 74,900 विच कम्स अराउंड, विच इज द 100-day मूविंग एवरेज, दैट विल बी नाउ द इमीडिएट सपोर्ट। सो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। किसी को अगर इफ समवन वांट्स टू बाय, देन आई वुड सजेस्ट वेट टिल 75,000। Okay, and there around you can go long with stop loss below 74,000, and ऊपर के लिए सेम ऊपर में 77,500 या 78 तक के 78,000 तक के टारगेट रख सकते हैं। अभी देखेंगे अगर फंडामेंटल फैक्टर्स का कुछ अगर बात करते हैं, तो गोल्ड के लिए यूएस के जो नंबर्स आ रहे हैं कुछ खराब नहीं है, इट इज स्टिल एज एक्सपेक्टेड। लास्ट अभी जो यस्टरडे के जीडीपी नंबर्स आए अच्छे आए हैं, खराब नहीं है। इवन इन्फ्लेशन नंबर्स जो है थोड़े बढ़ के आए हैं, दैट्स वाई जो नेक्स्ट ईयर के जो रेट कट्स के सिनेरियो है वो थोड़ा कम हो गए। बट ये जो दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का है, ये अभी इट इज स्टिल नियर अराउंड 60%। सो गोइंग अहेड वी एक्सपेक्ट दिस दिसंबर रेट कट विल हैपन, एंड ये थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहेगा गोल्ड के लिए। सो आई डोंट थिंक कि 75,000 या 74,000 मैक्सिमम उसके नीचे जाना चाहिए इमीडिएटली। और जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो भी, सीज फायर का भी थोड़ा बहुत ये इम्पैक्ट हुआ है। और कुछ आगे कुछ ऐसा आई डोंट थिंक सो मेजर कुछ अभी इवेंट है जो कि वोलेटिलिटी लेके आएगा। सो फॉर दिस वीक कोई भी अगर ट्रेड करना है तो 75,000 के आसपास तक वेट कीजिए, वहां पे खरीद के आप चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 74,000। नेक्स्ट विल कम टूवर्ड सिल्वर। सिल्वर में हम देखिए देखिए ये वीकली चार्ट है, स्पॉट सिल्वर है इंटरनेशनल। ये हम देख रहे हैं कि $30 के आसपास ही मूव कर रहा है लास्ट 2-3 हफ्ते से। सो जैसे कि हम लोगों ने पिछला टाइम भी मेंशन किया था, 29.30 जो कि 200 मूविंग एवरेज है, वो अभी भी क्रूशल है। सो मेरे हिसाब से जब तक वो होल्ड करेगा, प्राइसेस थोड़ा फिर से यहाँ से रिकवर भी हो जाएगा। एंड बट यस, ये जो हाईस है ऊपर के जो लेवल्स है 32 के लेवल्स, ये जब तक नहीं निकालेगा तब तक तेजी हम नहीं कर सकते। आई वुड सजेस्ट कि कोई अगर ट्रेड करता है थोड़ा रैली आए तो ऊपर में सेल कीजिए। इंटरमीडिएट के शॉर्ट टर्म करेक्शन है ये कमोडिटी में, बट अभी 2930 या 2950 तक ही मैक्सिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक होता है तो व्यू थोड़ा खराब हो जाएगा, देन हम लोग इसमें ज्यादा करेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक $28, इवन जो 27-2750 ये सब भी आ सकता है। बट आई डोंट थिंक 2930 के नीचे ये टिकना चाहिए ज्यादा दिन टाइम, बिकॉज ऑफ अभी फंडामेंटल्स का अगर बात करेंगे तो ये कमोडिटी लास्ट 3 साल से भी डेफिसिट में चल रहा है। सो इंडस्ट्रियल डिमांड भी अच्छा है। सो आई डोंट थिंक सो एनी मेजर फंडामेंटल में कुछ शिफ्ट हुआ है। यस, हाँ, अगर कुछ ट्रेड इश्यूज या ट्रेड टैरिफ्स वगैरह चाइना से आते हैं, सॉरी यूएस से आते हैं, सो इस पे इसको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। या अनूप, सो क्विकली, या सो ये जो रेंज बाउंड मूवमेंट जो गोल्ड में है ना, 2620 टू 2660, हम्म तो ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंटिल मोर मैं क्लैरिटी एक्स, ऑन द ट्रेड? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट 1 और 2 वीक के लिए ये रेंज रहेगा, नेक्स्ट 2 वीक के लिए मेजर रेंज रहेगा टिल नेक्स्ट फेड पॉलिसी जो कि आई थिंक 18 तारीख को है। तब तक ये मेरे हिसाब से रेंज रहेगा। और जैसे ही फेड पॉलिसी जो मेजर इवेंट है उसमें क्लैरिटी आ जाएगा, तो फिर हम नया मूव देखेंगे गोल्ड में। लास्ट ईयर भी हमने ये टाइम पे ही मेजर में गोल्ड में मेजर ब्रेकआउट देखा था और गोल्ड में अच्छा तेजी आई थी। सो आई एम एक्सपेक्टिंग the same kind of movement to happen this in the coming year also. So this will be a very crucial phase. ये टाइम मेरे हिसाब से जो भी है ट्रेडर्स को मैं रेकमेंड करूंगा रेंज में ट्रेड कीजिए और अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहिएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि वन साइड मूवमेंट रहेगा मार्केट में। अंडरस्टूड। ठीक है, सिल्वर का हम डोमेस्टिक लेवल एक बार चेक कर लेंगे। सिल्वर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज सिल्वर डेली चार्ट एंड इट इज मार्च कॉन्ट्रैक्ट।
87,700 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, दैट इज अ मेजर सपोर्ट नाउ। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लेवल्स होल्ड होना चाहिए इन 1 वीक और 2 वीक टाइम फ्रेम, और यहाँ से थोड़ा रिकवरी आनी चाहिए। बट 94,000 है जो कि मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर ही हम नया तेजी देखेंगे। अगर ये 87,700 फिर से ब्रेक हो जाता है नीचे में, देन वी कैन expect even 85,000 or 84,000. Okay, now comes to crude oil prices. Sorry to interrupt, Anup. So Yeah, same please. question जो last session में पूछा था मैं फिर से पूछ रहा हूँ. Is it the right time to accumulate gold and silver? I would suggest wait a bit. Okay, wait a bit. Would suggest थोड़ा करेक्शन आने दीजिए। ओके, देन एक्यूमुलेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए। अगर किसको लेना है तो मेरे हिसाब से एक फॉल के लिए वेट कीजिए, जस्ट वन फॉल फ्रॉम हियर ऑन, और एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करना चाहिए। Okay, yeah, we can go ahead. Okay, and now we come to crude oil. I think last week also we have discussed about crude, like we are expecting very range bound movement. ये crude oil MCX का चार्ट है, वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं। Yes, can you see it? I hope. Yeah, Arvind, is it visible, Yeah, crude oil yeah, chart? it's Yeah. crude oil chart is visible. Yeah, as we can see, it is in a descending triangle, and the range is getting narrower and narrower day by day. इवन लास्ट 2 मंथ से अगर हम एमसीएक्स के प्राइसेस देखेंगे तो ऊपर में 6300, एक सेकेंड, व्हाट इज राइट नाउ, इट इज समथिंग नियर अराउंड, या 6300 के ऊपर भी नहीं गया है ये प्राइसेस। ओके, और थोड़ा अगर बड़ा रेंज देखेंगे तो 6500 के ऊपर तो नहीं गया है, और नॉट इवन ऑन द डाउन साइड 5500 या 5450 के नीचे गया है। अभी लास्ट एक हफ्ते या 2 हफ्ते से अगर देखेंगे, ये तो रेंज 6100 या 150 हो गया ऊपर में, और नीचे में 5700 हो गया, ये रेंज हो गया। तो ये रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। और कोई अगर स्ट्रैटेजी प्ले करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है किसको, तो ये जो दो रेंज है, ये रेंज का ट्रायंगल बेच सकते हैं और आपको प्रीमियम मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने लास्ट और ये 2-3 दिन पहले एक स्ट्रैंगल बेचा था, बिकॉज हम देखिए नेक्स्ट एक, ये जो दिसंबर 1 को ओपेक का मीटिंग है, सो इसमें कुछ बिकॉज ऑफ वो ओपेक का मीटिंग है, मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है। अभी सीज फायर की वजह से प्राइस जो लाइक जो नीचे आए थे, अभी फिर से मार्केट थोड़ा पॉज हो गया है। लास्ट वीक हमने देखा था रैली हुआ था बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन का वॉर का। अभी जो करेक्शन आया सीज फायर के टॉक्स का, सो देर आर कॉन्स्टेंटली मिक्स्ड फैक्टर्स। ओके, चाइना से थोड़ा बहुत डिमांड इंप्रूव हुआ है लास्ट मंथ, सो बट आई डोंट सी एनी मेजर मूवमेंट अनटिल अनलेस क्योंकि कुछ मेजर और इवेंट ऐसा कुछ आता है। सो अगर किसी को ट्रेड करना है, आप मैंने एक रिसेंटली हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था 5700 और 6100, ये रेंज में हम लोगों ने स्ट्रैंगल बेचा था, समथिंग अराउंड 210 या 215 के आसपास। अभी आज देखेंगे तो वो कुछ 180 के आसपास है। सो ऐसा कोई ट्रेड करना चाहे तो ट्रेड कर सकता है, रेंज में ट्रेड कर सकता है। फॉर क्रूड ऑयल आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम रेंज, बट ओवरऑली आई डोंट सी ए मेजर अप मूव इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, बिकॉज अभी देखिए जो ट्राइंगल, ये जो फॉर्मेशन है, ये बेरिश फॉर्मेशन डिसेंडिंग ट्राइंगल है। दिस इज द थर्ड टाइम इट इज गोइंग टू हिट द लोअर बैंड ऑफ द चैनल। सो अगर ये ब्रेक होता है तो देन इट विल अगेन फॉल, जो कि करेक्शन होना चाहिए। अदर फैक्टर्स के हिसाब से अगर देखेंगे, फंडामेंटल अगर फैक्टर्स हम बात करेंगे, चाइना की तरफ से कुछ मेजर अनाउंसमेंट आता है। ओके, एंड उसका जो भी है एक्टिविटी बढ़ती है, रिफाइनरी एक्टिविटी बढ़ती है, एंड ओपेक की तरफ से जो अगर प्रोडक्शन जो इंक्रीज का बात चल रहा है, अगर वो फिर से डिले हो जाता है, तो अगर ये सब चीजें आएंगी तो वी कैन सी सम अपवर्ड मूवमेंट इन ऑयल प्राइस। अदरवाइज ये जब भी ऊपर जाएगा फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। आई वुड से ये रेंज में ही रहना चाहिए इन नेक्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स भी टाइम ले लीजिए आप। अरविंद, कुछ क्वेश्चन बट है इस अनूप, पे? ये या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का भी कुछ इम्पैक्ट तो रहेगा ना? यस, ये तो देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट? जो होना था वो पॉजिटिव इम्पैक्ट एक आ गया, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मार्केट ऊपर में सस्टेन नहीं हुआ। ओके, बिकॉज ये जो रशिया और यूक्रेन का जो टेंशन है, इससे ज्यादा कुछ सप्लाई साइड में इफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, जो रशिया का सप्लाई है वो डिफरेंट रूट के थ्रू वो फुलफिल हो रहा है।
ओके, सेकंड थिंग, यूएस का जो प्रोडक्शन है वो हायर लेवल पे है। ओके, और यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है एवरी एवरी नाउ एंड देन। और ऐसा नहीं कि यूएस का डिमांड भी अच्छा है। लास्ट वीक हम लोगों ने जो इन्वेंटरी नंबर्स देखा था, क्रूड ऑयल के इन्वेंटरी नंबर्स कम आ रहे हैं, 2 हफ्ते से कम आ रहे हैं। लेकिन आप देख रहे रहेंगे गैसोलीन के जो स्टॉक्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, सो गैसोलीन के स्टॉक्स अभी भी इनफ है। सो आई डोंट थिंक सो देर इज एनी मेजर सप्लाई इश्यूज। हाँ, ये जो एक चीज है अभी फिर से एक आया, जो ट्रम्प के आने के बाद से जो टैरिफ का इश्यूज है, ये हम देखना पड़ेगा ये कैसा इम्पैक्ट करता है। जो कल या परसों जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, ओके, उसके बाद बट वी डोंट स्टिल हैव डोंट एनी क्लैरिटी ऑन नंबर्स। ओके, सो जैसे ही ये थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगा वी कैन सी movement in price. Otherwise, I would say in MCX 6100 and 5700, this will be the range for like 1 week or so. अगर थोड़ा दूर का व्यू देखेंगे तो it will be 6300 to 5500 or 5450. This will be the major range for MCX global prices. Okay, we can move on to natural gas. Yeah. Yeah, I think natural gas is the highly volatile commodity since last few weeks. We saw a good move. I think Arvind has already discussed some fundamental points also. See, it's let can see the charts. Yeah, this is the weekly charts of MCX natural gas. Clearly, there is a good pattern. Frankly, clear breakout is there. Consolidation move was there almost a year, a consolidation, and there is a breakout. But 304, 305, this is the major resistance for the time being, because since last November, it has been in this range. Okay, so if it will move above 305, then we can see a clear cut breakout and we can see high movement and all that. Otherwise, I'm expecting again a small correction towards 260, even 250. Uh, there we can see some again consolidation, और फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए। बट ये वीक आई वुड सजेस्ट थोड़ा अभी प्रॉफिट बुक करके साइड में रहिए। कोई अगर लॉन्ग पोजीशन है देन आई वुड सजेस्ट एनी रैली, एनी रिकवरी रैली फ्रॉम हियर ऑन टुवर्ड्स 290 अभी भी आता है तो आई वुड सजेस्ट बुक करिए, एग्जिट करिए लॉन्ग पोजीशन। और जो शॉर्ट पोजीशन करके रखे हैं उनको या तो 305 का स्टॉप लॉस रखिए या 292 ऐसा सब स्टॉप रख के होल्ड करिए बोलूंगा। डाउन साइड में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी 260 के आसपास ही बोलूंगा। इसके आसपास आए तो बुक करके साइड में रहिएगा, ऐसा ही रेकमेंड करूंगा। अरविंद, किसका कुछ Yeah, क्वेश्चन है? actually, chat में हम्म, coal से भी there are a lot of questions for natural gas only, ओके, considering the movements here. So यस, इसमें कुछ any indicators to follow for gold and natural gas? सॉरी, फॉर नेचुरल गैस ओनली, Any, राइट? yeah, sorry, for crude and natural gas. ओके, सी क्रूड में देखो अभी जैसा मूवमेंट है क्रूड में, अगर कोई इंडिकेटर या कोई टेक्निकल टूल्स यूज करना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट आप बॉलिंजर बैंड्स अब यूज कीजिए, बिकॉज इट इज इन अ वेरी साइडवेज मार्केट। ओके, तो साइडवेज मार्केट में बॉलिंजर बैंड्स अच्छा काम करता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट यस, डायनामिक्स चेंज होगा, देन यू हैव टू चेंज योर टूल्स। ओके, सो ये टूल आप यूज अभी के लिए यूज कर सकते हैं। नेचुरल गैस में आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज बॉलिंजर बैंड्स, because right now it is a very volatile commodity, so ये कोई भी साइड मूवमेंट रह सकता है। अगर किसका पोजीशन है नेचुरल गैस में, एक सेकंड आप देख सकते हैं, ये वीकली चार्ट है। अगर हम इसको डेली चार्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड, यस, अभी देखिए जो कल परसों का 2-3 दिन का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये एक देखा जाए तो आपको फॉर्मेशन थोड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से। अ, आज अगर आज तो यूएस हॉलिडे है, आई डोंट सी मच मूवमेंट। अगर कल के दिन में मार्केट नहीं सुधरता है तो मैं बोलूंगा कि 260 फिर से आ जाएगा, इवन 255 के आस 260 या 260 के नीचे भी आ जाएगा। सो अभी के लिए जिसका लॉन्ग है मैं उनको बोलूंगा ट्राई टू एग्जिट, वैसा ही बोलूंगा। Okay.
या एक और देयर इज क्वेरी अ है। वीकली चार्ट, अगर अभी इसका वीकली चार्ट अगर अभी देखेंगे ना, तो Yeah. वीकली चार्ट में एक अभी वीकली चार्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट इट इज अ वेरी काइंड ऑफ अनडिसिशन काइंड ऑफ अ कैंडल, बिकॉज ट्रेडर्स तो तेजी करके गए थे, बट दे स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू एट करंट, दे आर स्टिल कंफ्यूज। सो मैं वही बोलूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए अभी के लिए। ठीक है, यस सर, गो अहेड। ओके, नेचुरल गैस का दिसंबर प्राइसेस में देख रहा हूँ हम्म। at MCX is 272 now. So but January is 260 and Feb is 243. So ये आगे का मंथ्स का प्राइसेस क्यों कम है? Is it only because of the weather, the यस यस, winter देखिए अभी scenario? अपना जो एमसीएक्स का नेचुरल गैस है ये टोटली पैक्ड है नाइमेक्स के साथ। अभी नाइमेक्स में भी आप देखेंगे जो अभी चल रहा है जनवरी और फेब्रुवरी सभी में बैकवर्डेशन है, मतलब डिस्काउंट में है। और ये क्यों है? क्योंकि अभी सीजनल उसका ये सीजन है, और ये टाइम पे लोग अभी किस जो फिजिकल डिमांड ज्यादा है। कोई भी कमोडिटी ऐसा कब सिनेरियो में रहता है, ऐसा जो बैकवर्डेशन में कब रहता है, जब उसका करंट फिजिकल डिमांड ज्यादा रहेगा और फ्यूचर में डिमांड कम रहेगा, उसके वजह से ही ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है। सेम अभी नेचुरल गैस है, अभी विंटर सीजन है, फिजिकल डिमांड ज्यादा है, इसकी वजह से जो करंट मंथ के प्राइसेस ऊपर रहेंगे। इवन अगर अभी कोई स्पॉट में जाके खरीदने के लिए देखेगा तो स्पॉट प्राइस उनको अभी फर्स्ट मंथ फ्यूचर के प्राइस से भी ज्यादा मिलेगा, बिकॉज ये प्योर सीजनल डिमांड का सिनेरियो है और कुछ नहीं है। दैट इज द ओनली रीजन, और कुछ रीजन नहीं है। Okay, cool. I know you had covered the crude oil part, but someone had asked for crude oil prediction. So just quickly, हम्म। prices थोड़ा बता देंगे तो for crude oil. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, अभी ये देखिए आप, ये क्रूड का चार्ट है। आई कैन यू कैन एनीबडी सी दिस? यस, Yes, visible. ये क्रूड ऑयल का डेली चार्ट है। देखिए फंडामेंटल फैक्टर्स तो अभी हमने कवर कर लिया है। अभी क्रूड में देखिए ये डेली चार्ट्स में आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, सपोर्ट है, ये देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था उस दिन, उसके बाद एक तेजी आई। ओके, बट ये प्रीवियस हाईज जो थे 6140 के, ये इसके ऊपर नहीं, मार्केट नहीं टिक पाया, इट हैज नॉट सस्टेन्ड। फिर से करेक्शन आ गया नीचे, नाउ इट इज अगेन हॉल्ट, यहाँ पे हॉल्ट हो गया। आज तो यूएस हॉलिडे है, आज कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, फिर अभी लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से जाएगा, देन आल्सो वी डोंट एक्सपेक्ट मच मोर मूवमेंट। अभी यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 5700 के लेवल्स अगर नहीं टूटते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी अगेन टुवर्ड्स 6000। सो वही ऊपर में 6000 और नीचे में 5750, ये रेंज में आप नेक्स्ट एक दो दिन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। Okay, cool. Noted. We can go ahead with copper. कॉपर, राइट, ओके, जस्ट अ सेकंड ना। या कॉपर के लिए देखिए अभी सिनेरियो ऐसा है कि कॉपर में थोड़ा बहुत तो जो फॉल था वो कम हो गया है, बिकॉज चाइना की तरफ से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जो इन्वेंट्रीज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जो कि एलएमई हो गया है, फिर आपका एसएचएफई हो गया है। ये सब तो फंडामेंटल्स आई थिंक अरविंद ने कवर किया ऑलरेडी। अगर हम ये टाइम का देखेंगे, अदर मेटल्स में भी सेम सिनेरियो है, और सब में जो रॉ मटेरियल होता है रिफाइंड कॉपर फॉर्म जो भी है, उसके लिए उसके प्रीमियम थोड़ा बढ़ गए। अभी आप जिंक का ले लो, एल्यूमिनियम का ले लो, सबका। सो और इन्वेंटरी भी कम होता जा रहा है, इसके लिए प्राइसेस को सपोर्ट है। ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको डिमांड डिमांड सप्लाई के साइड से। बट अगर कुछ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे, हाँ, अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साइड से देखेंगे, तो चाइना की तरफ से जो कॉन्स्टेंटली उनके जो स्टिमुलस मेजर्स जो भी आ रहे हैं, एंड रिसेंट पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं। अ, अभी लिक्विडिटी भी दिया है इन लोगों ने लास्ट ये वीक में। अभी ऐसा होप है कि दे आर गोइंग टू रिड्यूस द एसएलआर, जो कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है बैंक्स में, और लिक्विडिटी पुश करने के लिए वो भी कम कर सकते हैं उन लोग। सो उनका जो जीडीपी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए दे विल डू whatever they want to do to support the economy, and other things going around, फेड के पॉलिसीज हैं, ईसीबी के पॉलिसीज है, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर से थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी देखा जाए तो लास्ट वीक से ही हम देख रहे हैं जो फॉल के बाद एक साइडवेज
रेंज में चला गया है, कॉपर प्राइसेस पूरा रेंज में है। सो 814-15 का लेवल अगर ये निकालता है तो हम देखेंगे कि फिर से एक मूव आएगा 830 रुपए तक। अदरवाइज आई सी 800 या 795 और ऊपर में 815, ये रेंज में है। कोई किसी को ट्रेड करना है तो 8 के आसपास आए तो आई वुड सजेस्ट टेक अ बैट, बाय करिए। 795 या 96 का स्टॉप रखिए और ऊपर में आप 810 या 814 तक का टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं व्यू दे रहा हूँ फॉर वीक, 1 वीक, नेक्स्ट वीक तक। तो इसमें कॉपर में भी बेसिकली हैड अ बुलिश व्यू ना, मतलब व्हेन आई यस, वाज डिस्कसिंग फंडामेंटल्स, बट ये यस, ट्रेड टैरिफ्स एक्चुअली क्या इम्पैक्ट होगा, वो तो नेगेटिव ये इम्पैक्ट ही देने वाला है यस, ना ये कॉपर। जो ट्रेड टैरिफ्स का है जो अभी, हाँ, ये एक जो है जो कि नेगेटिव फैक्टर है मेटल्स के लिए। बिकॉज अगर चाइना के ऊपर कोई और यूएस की तरफ से ट्रेड टैरिफ्स फिर से आता है तो डेफिनेटली प्रेशर आएगा इसमें। ओके, बट अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है, इमीडिएटली ऐसा कुछ अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हाँ, हम लोग करेक्शन देख सकते हैं। दैट्स वाई इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कॉशियसली थोड़ा ट्रेड करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई बाय करके बाय पोजीशन है या तो 795 के स्टॉप रख के आप ट्रेड करिए, वही रेकमेंड करूंगा। अभी देखिए जो यूएस की तरफ से जो लास्ट उनका जो ट्रेड टैरिफ्स के ऊपर आया था, ऐसा था कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स के ऊपर चाइना से जो आते हैं उस पे वो टैरिफ्स लगाएंगे। ऐसा एक सिनेरियो है। दूसरा एक सिनेरियो है कि सारे जो भी आते गुड्स आते हैं उस पे पूरा टैक्स लगाएंगे या टैरिफ जो भी है। ओके, सो ये अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं हुआ है। जैसे जैसे क्लैरिटी आएगा हम इसमें ज्यादा, लाइक वी आल्सो गेट मोर क्लैरिटी ऑन दैट। ओके, बट ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस है, हम्म, रेगुलरली वी आर सीइंग न्यूज़ की हम्म, सेंट्रल बैंक और सम चाइनीज वन इन्फ्यूज कर रहा है इकोनॉमी में, हम्म। सो विल दोस infusions in the future, will they be able to counter the trade tariff impact? आई थिंक देखिए अभी लास्ट 2-3 महीना या 4 महीना हो गया, ये जो चाइना से अभी भी देख रहे हैं हम लोग, स्टिल दे आर पुशिंग मोर एंड मोर, इंजेक्टिंग मोर लिक्विडिटी। ओके, Yes. उसकी वजह से प्राइसेस अभी तक टिका हुआ है। और उनके अभी भी ऐसा देखा जाए तो इवन वी डोंट हैव, वी हैवंट सीन सो मच स्ट्रेंथ इन हाउस प्राइसेस। जो उनके हाउसिंग प्राइसेस है वो अभी भी वीकर है। लाइक उनमें इतना जल्द इतना रिकवरी नहीं हुआ है। लास्ट मंथ के भी हाउस प्राइसेस आए थे, वो नेगेटिव में ही थे, यानी ग्रोथ नहीं है। एमंग ऑल द मेजर, कुछ 5 to 7 मेजर सिटीज है जिसमें के हाउस प्राइसेस में थोड़ी बहुत सुधार हुई है। बाकी अदर मेजर सिटीज है जो उसमें अभी भी देर इज नो ग्रोथ। और अगर हम देखेंगे रिटेल सेल्स थोड़ा इंप्रूव हुआ है लास्ट मंथ। उनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टिल इट इज लाइक नॉट अप टू द मार्क, बट थोड़ा उसमें भी रिकवरी है। और ये जो उनका ट्रेड नंबर्स है वो थोड़ा अच्छा है। बिकॉज ऑफ ट्रेड नंबर्स ये बोल रहे हैं कि यस, चाइना इज स्लाइटली ग्रोइंग कंपेयर टू जो 3 और 6 महीने पहले का देखेंगे और अभी का देखेंगे। सो इट इज स्लाइटली इम्प्रूविंग। सो देर इज स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन ग्रोथ टर्म्स, बट दैट मेजर और रैपिड ग्रोथ वाला अभी सिनेरियो नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अभी भी वो लोग पुश करेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी लो है। यूएस चाइना में इन्फ्लेशन अभी भी लो है तो सेंट्रल बैंक विल पुश। सो मेरे हिसाब से ये मंथ में एसएलआर का कट उनका एक्सपेक्टेशन है वो भी आ जाएगा और फिर से लिक्विडिटी पुश भी आ सकता है या कुछ और भी मेजर सपोर्ट आ सकती है। ओके, cool. मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू क्रूड ऑयल। आई जस्ट हैव वन मोर क्वेश्चन। ओके। ये जो मिडिल ईस्ट सिनेरियो, जो ईरान हेजबुल्ला हम्म, इसराइल सिनेरियो हुआ था, उससे पहले क्रूड ऑयल वाज एट $90 लेवल, राइट? हम्म, हम्म, So even before all these things started to happen, it was at the $90 level. आज because of that same scenario going into ceasefire talks, तो हम्म। हम देख रहे हैं that's come down to $69-70 level. $70, So यस। so shouldn't we expect it to go back to the pre Israel Hezbollah scenario, like back to $90? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है बिकॉज अभी के हिसाब से जो फियर था ना वो फियर अभी मार्केट में खत्म हो गया है। बिकॉज ये जो रिस्क प्रीमियम था सप्लाई का, ओके, वो Mm-hmm. थोड़ा खत्म हो गया। अभी जो सीज फायर हुआ है ये 2 महीने के लिए हो गया सीज फायर। ओके,
सो ये अभी 2 महीने तक तो ऐसा कुछ मेजर ऐसा होना नहीं चाहिए मिडिल ईस्ट में। थोड़ा बहुत जैसा कंटिन्यूस वो है वो चलता रहेगा, बट फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ आई डोंट सी मेजर इश्यूज। दूसरा चीज, रशिया और यूक्रेन का ये तो पहले से भी था, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। बट रशिया की तरफ से जो सप्लाईज है वो अभी भी वाया इनडायरेक्टली ये वो उसके सप्लाईज चालू है। मेजर थिंग इज चाइना। चाइना से डिमांड इंप्रूवमेंट उतना नहीं है। अगर पिछला साल का जो क्रूड इंपोर्ट नंबर्स देखेंगे और ये साल का क्रूड इंपोर्ट नंबर्स देखेंगे तो उसमें कमी है। ओके। ओनली ये जो नवंबर मंथ या जो लास्ट मंथ का, ये अक्टूबर नवंबर का मंथ का देखेंगे, उसमें ही उनका क्रूड इंपोर्ट्स में थोड़ा सुधार हुआ है। ओके। ओके अदरवाइज हाँ। और ये जो उनके तरफ से भी देखा जाए ना, लाइक दे आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। सो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो धीरे धीरे चाइना में कम हुआ है। अगर ये डिमांड साइड क्या हो गया, अगर सप्लाई साइड के देखेंगे तो यूएस के तरफ से जो सप्लाई साइड्स में तो मैंने जितना देखा था उससे तो इम्प्रूव ही हुआ है यूएस की तरफ से। बाकी रशिया से भी ऑलमोस्ट अभी, हाँ यस, अभी जो ओपेक का प्लस ओपेक का मीटिंग आएगा उसमें भी थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा कि व्हेन दे आर गोइंग टू लाइक बैक विथ दिस, जो उनका जो प्रोडक्शन कट है वो उसको कैसा फुलफिल कर पाएंगे इन जनवरी ऑनवर्ड्स। तो उसके ऊपर और क्लैरिटी आ जाए तो थोड़ा और हमको डायरेक्शन में अच्छा रहेगा डायरेक्शन ओके के लिए। या ओके कुछ एंड दिस फॉर द व्यूअर्स आप और भी वी आर एट 4:52 सो विल वेट फॉर 5-10 more minutes आपका कोई क्वेरीज है तो प्लीज डाल दीजिए वी विल टेक अप दोस क्वेश्चंस एंड ऑल्सो वन मोर मेजर थिंग आई वांट टू आस्क द व्यूअर्स दो सेशंस तो हमने कर लिया इस सीरीज में इनसाइट्स ट्रेंड एंड फोरकास्ट फॉर कमोडिटीज बट वी वांट सजेशंस फ्रॉम यू आपको और कुछ चेंजेस चाहिए इफ देयर इज एनीथिंग more we can add or or reduce anything to speak more about, please put your suggestions in the chat box. We will definitely take it up and incorporate in our upcoming sessions also. And while you are doing that, I'll just simultaneously sum up what we had discussed. तो पहले तो मेजर न्यूज हम लास्ट वीक या इस वीक में देखे थे, द सीज फायर टॉक्स बिटवीन इसराइल एंड हेजबुल्ला. So that was a major news that brought down bullion and energy prices as well. तो उसके अलावा गोल्ड के लिए you will have to look at the US Fed decision on December 18th, जिसका 25 bips rate cut is already considered in the market, but still you'll have to look at those things also and more focus on this trade tariffs or trade war situation that might come up in the future. Again, Donald Trump will anyways take up the office in the month of Jan, I believe Jan 19th, right, Anup? यस So तब यस। तक तो we will have to wait and look ahead for these trade tariff news. तो उसके अलावा कॉपर तो फॉर नाउ इट इज इन अ बुलिश व्यू. नेचुरल गैस अगेन इज आल्सो इन अ बुलिश व्यू फॉर दिस सीजन. क्रूड ऑयल में रेंज बाउंड ट्रेडिंग है एंड गोल्ड सिल्वर में भी फॉर अ वीक और टू इट इज इन द रेंज बाउंड ट्रेडिंग ओनली. Any other point you would like to add, Anup? And meanwhile, audience, please put your suggestions or any more queries if you have. Yeah, Anup. नहीं, I would there is nothing much to say. uh, Okay. ठीक है, then we will again come back on 12th. Okay, there is a query. आपकी recommendations कहाँ मिलती है? Mr. Chetan, if you're asking about the research recommendations, yeah, commodities में, if you're asking about the research recommendations or those trading ideas, आप लॉग इन कर लीजिए ICICI डायरेक्ट में. उसमें ट्रेडिंग आइडियाज एक सेक्शन रहता है अंडर स्मार्ट टूल्स, तो वहाँ पे आपको रिसर्च रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे. तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वेबसाइट. अगर मोबाइल ऐप है तो उसमें भी एक रिसर्च का सेपरेट सेक्शन है. और इवन इफ यू गो टू द कमोडिटीज होम पेज, वहाँ पे भी आपको रिसर्च सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे रिसर्च रिकमेंडेशंस भी है एंड द रिसर्च रिपोर्ट्स भी है. बट स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट थर्सडे, दैट इज कमिंग थर्सडे. नेक्स्ट थर्सडे में आपको हाउ टू ट्रेड, वाई टू ट्रेड विद कमोडिटीज एट ICICI डायरेक्ट, इसका एक अच्छा सेशन आपको मिल जाएगा. ऑल द स्मार्ट टूल्स, नो ऑप्शन चेन, रिसर्च रिकमेंडेशंस, रिपोर्ट्स या कोई भी ऑर्डर प्लेसमेंट,
सब कुछ बेस्ड ऑन वेबसाइट और मोबाइल ऐप और इन द वॉच लिस्ट सेक्शन, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन उस सेशन में मिल जाएगा. सो दिस सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट 5th of November. हमारा नेक्स्ट सेशन एपिसोड 3 फॉर इनसाइट्स ट्रेंड एंड फोरकास्ट विल कम ऑन December 12th again. So please be stay tuned for these 2 sessions. ओके सर, प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेगी? प्रीवियस वीडियो अगेन यू कैन सर्च फॉर द सेम टाइटल जो आपको अभी दिख रहा है, कमोडिटीज इनसाइट्स ट्रेंड एंड फोरकास्ट नंबर 1. तो आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट के चैनल में भी जाके देख सकते हो. यू कैन विल बी एबल टू फाइंड आउट द वीडियो. ओके, वी आर एट 56 नाउ. We'll just wait for a minute more. If there are any questions or any feedback or suggestions that we can take. Can we have expiry session by Prakash ji? As such, expiry sessions to nahi kar rahe. We are only doing these weekly sessions, but we will definitely look at going live for this crude oil expiry next month. December ka jo bhi crude oil expiry hai, we will try and come up with a live session on that day. Or we can do this session, the insight session, during the crude oil expiry day itself. We'll definitely try it out, Prakash ji. चेतन जी का देयर इज आल्सो जिंक व्यू चाहिए करके पूछ रहे थे. या जिंक के लिए हम देखेंगे से. देखिए अभी जिंक का ऐसा है कि लास्ट कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उसके कैंसिल वारंट्स बढ़ते जा रहे हैं. ओके, एलएमई पे वो थोड़ा पॉजिटिव है. और हम देखेंगे तो 270 के ऊपर जब से चला है ये, ऊपर में 290 या 295 तक आ गया है ऑलमोस्ट. सो ओवरऑली तो व्यू अभी भी देखा जाए तो पॉजिटिव ही है. सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कीजिए. 278 या 276 के रेंज आएगा तो आप बाय कर सकते हैं, और 275 के नीचे का स्टॉप रखिए. एंड मेरे हिसाब से ऊपर में आपको फिर से 24-85 के लेवल्स फिर से दिखने चाहिए. थोड़ा आज करेक्शन, यस आज थोड़ा करेक्शन है, बट आई वुड सजेस्ट 277 के आसपास तक आप रुकिए. अभी तो फिलहाल एंट्री मत कीजिएगा. ओके, एक्चुअली जिंक में भी एक और क्वेश्चन भी है. जैसे मोनेश पटेल, इन्होंने भी बोला है कि अनूप सर, इफ यू कैन ऐड जिंक इन द वीकली रिपोर्ट्स इट वुड बी हेल्पफुल. ठीक है, we'll give our view in the weekly reports. No issues. We'll try to put it. Yeah, and Chetan ji, I just wanted you to inform, ये research recommendations के बारे में पूछ रहे थे. मोबाइल ऐप में आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर कमोडिटी नोटिफिकेशंस. मैं क्विकली दिखाता हूँ. इफ इट इज there's just 2 more minutes for 5 o'clock. So if my mobile app is visible here, तो यहाँ पे टॉप कॉर्नर में एक सेटिंग्स का सेक्शन रहता है. Yeah, this setting section. So इसमें जाके you can go ahead and subscribe notifications. वहाँ पे research पार्ट में, research I click to invest के अंदर commodity futures and commodity options आप enable कर सकते हो, right? So this process जो notification subscribe करने का process है, वो भी actually एक short video है YouTube में, channel में. commodity notifications कैसे सब्सक्राइब करना है वो भी चेकआउट कर लीजिए. सो यू कैन एक्टिवेट दोस नोटिफिकेशंस. यू विल गेट लाइव नोटिफिकेशंस ऑन द रिसर्च. जैसे भी अनूप सर अपडेट करते हैं कॉल्स, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, सो सजेशन टेकन मोनिश जी. हम विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट जिंक आल्सो इन द रिपोर्ट्स. ठीक है, आई थिंक that's all the queries that we have. I think we can close, Anup. Thank you all. Thank you, viewers. Stay tuned for the next session also. Next week on 5th December, we'll be coming up with basics and how and why to trade commodities. And उसके बाद 12th December को we'll come up again with the 3rd session for this series, Insights, Trend and Forecast. Until then, thank you all. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.